here customer satisfaction is when both data are metric, then regression is applied. Four statements of loyalty and two groups, right? In that case, you have to take the mean score of loyalty, four statements, take the mean score, and then see whether that mean score differs for two groups. One single dependent variable, because four items, four are not there. There is only one dependent variable. You take the mean score of loyalty and then check whether it is different for males and females. But customer satisfaction is a metric data, so simple regression. So regression is the tool. That is also parametric. मीन स्कोर को चार स्टेटमेंट्स का एवरेज कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 divided by 4. That will be your dependent variable. Yes. हाँ. Shapiro test and KS test. These are the two tests, and their p-value will tell you whether they are parametric. They are going to apply parametric or non-parametric. In addition to this, there are some additional, you can say, parameters like ±3 values of this skewness and kurtosis. That can also tell you about whether it is normal or not normal. But we will give first preference to Shapiro. For small sample, for large sample, yes. But if both the samples are large, for large sample, we will go for okay. उस केस में जो kurtosis चेक करते हैं, हमें यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी और मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी दोनों चेक करते हैं. Univariate, because we are putting data for one variable. Multivariate ना नहीं होगा उसमें. अगर मान लो हमें MOS यूज करना है, उसमें नॉर्मलिटी की कंडीशन. So shall we check both the things, univariate and multivariate? In SEM, multivariate your normality has to be checked. Then you have to shift for non-parametric SEM. That is PLSM. Okay, from the discussion which is going on here, let me take you to a very, very important aspect of multivariate normality. Right? Multivariate normality, let me show you how to check multivariate normality. I'm sharing my screen. All of you can see what is to be checked into multivariate normality. Just have a look at the scenario. Now the screen is visible. Everybody just focus on the screen. I said that y is equal to alpha plus beta 1 x1. If we have one independent variable and one dependent variable, all of you should note down what I'm writing, right? Okay, this will help you. One dv, one idv, and dv is metric and idv is also metric. Metric means interval ratio. Then the tool which is applicable is simple regression. Simple regression means one IDV. Okay. Let us say customer satisfaction. This is customer loyalty. So you will apply what? You will apply simple regression. Okay. For example, if I take you to this file again, this is the standard file. Since morning we are applying that CGPA of the student. CGPA of the student is dependent upon performance goal, mastery, interest, anxiety. If I say regression has to be applied, then analyze and go to regression. Analyze and go to regression. We want regression to be linear regression, linear. And
it will ask me what is my dependent variable. So DV is my CGPA, and I can say that performance goal is my independent variable. If one IDV is there, we are working with simple regression. It is a parametric test and we are going to work with this regression. But if I am working with more than independent variables, one, I am talking about multiple regression. Multiple regression. For example, if I add mastery of the subject, I add interest of the subject, I add anxiety level of these students. So these are four independent variables. I am talking about multiple regression. So in this case, if I in this case, if y is equal to alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3, this is a scenario of multiple regression. Okay, multiple regression. Now, if this is metric and all these variables x1, x2, x3, they are metric, then I am talking about multiple regression. Okay, but if my variable, what I will get? I will get R square. I will get R square, coefficient of determination. What is the variance explained in dependent variable due to independent variable? That is a customer satisfaction. For example, R square is 0.40. This means 40% of the variance is explained in my loyalty due to customer satisfaction. If customers are satisfied, I can determine my loyalty to the tune of 40%, 60% maybe other variables. So rest of the variables will go into E, unexplained. But if here R square is 40%, so I need to understand this 40% is coming from which variable? Beta 1, beta 2 or beta 3. So this beta which we take for comparison, this is called as standardized beta. Standardized beta, right? For example, this is apple, this is oranges, and this is banana. All the three fruits are different, but the three are fruits. I want to compare apple with oranges with banana. I cannot compare three different units. Apple is for 200 rupees, banana is 60 rupees kg, dozen. But still I want to compare A versus O versus B. In this case, I will use standardized beta. How I will use standardized beta? I will take X minus X bar, the price of apple minus the mean of apple divided by the standard deviation of apple. The series of apple, I will take the series of apple, I will take the mean. X minus X bar divided by standard deviation of apple. With this series, I will standardize the series. I will standardize the series. Now I can compare apple versus oranges versus banana. So this beta, for example, this beta is 0.80, this beta is 0.70, this beta is 0.50. So I can say apple is more robust and giving more variance into 40% R square. Apples are more significant, followed by oranges, followed by banana. So tomorrow, when you will listen the lectures, you will come to know you will be only handling multiple regression. Tomorrow's full day is on multiple regression, and you all will be dealing with metric data. Entire day is on metric data. You will be handling many independent and dependent variables. But if there is one dependent variable and others are independent variables and all are metric, you can compare all these two with the help of beta. I can add beta 4 x4 only and only if they are measured in binary number. Binary number, here in this case we have gender. Let me take you to the file again. This is file and I can take gender, but the condition is it must be 0 and 1. 1 and 2
Nominal data we cannot apply, but 0 and 1 we can apply. So I can apply multiple regression with independent variable which is binary. The categories must be only two, 0 and 1. 0, 1, 2 is not possible. Okay. So 0 and 1, this beta, this beta cannot be compared with other betas, because this beta will tell you that whether males or whether females are contributing to the R square of the model. This beta, apple beta, oranges beta and banana beta, they can be compared, but the beta of gender will not be compared with others. It will tell whether 0 is more active or 1 is more active. 0 means male, 1 means female. I have coded like this. So I can only tell with the help of beta. If the beta is minus, it is representing 0 category. Regression is a tool, parametric tool, which is applied on metric data only. But if I am taking non-metric data, I can take only if it is binary. So binary will tell that if the beta is minus, it is representing 0 category. Let us say 0 is male. That means I will say males are more active towards customer loyalty. Why is customer loyalty? Let us say. Okay. So if the beta of gender is minus, it is representing 0 category. If beta is positive, it is representing 1 category. That means females are more active towards. Okay. Got it? Any variable, if it is binary, it is reported only in plus or minus. Minus beta, 0 category, plus beta, 1 category. Got it? This is multiple regression. I can take binary data into multiple regression. This is one aspect of multiple regression. So Simran is asking, if we have many independent variables, some are not normal, then what to do? See, Simran, we are going to work with dependent variables. Okay. In case of such multiple regression, we will not go for univariate normality. We will check multivariate normality. Just give me 5 minutes. I'll take you to multivariate normality in a software. Free software, web power software. We will put our data and check whether multivariate normality is there. So in case of multiple independent variables, this software is web power. Okay. So in this case, we can check whether the multivariate normality is there or not. In the morning session, we have handled univariate normality of the DV. CGPA was normal or not, right? But now in multiple regression, we will go for multivariate normality test. Right? So this is multiple regression. Then the future of next type of regression, just have a look at the screen. I am writing the next aspect of regression. If my dependent variable is non-metric, non-metric, you know what is non-metric? Non-metric is categorical data. So if my y is non-metric, that means y is 0 and 1. India will win the match or India will lose the match. If this is my dependent variable and x, beta 1, x1, how many wickets in hand are there now? Wickets in hand. X1 is wickets in hand. Beta 2, x2, how many overs are left? Right? What is the batting order which is going on? X3. So if 7 wickets are down and जब हटा दो तो बंद हो जाता है बिल्कुल ये. Please mute. So if I am looking forward for lose or win or lose, that means earlier my dependent variable was metric.
But if my dependent variable is also non-metric, then I will not calculate R square. Then I will calculate probability of happening or non-happening of an event. Probability of happening or non-happening of an event. And in such a case, you will go for binary logistic regression. You will go for binary logistic regression. And instead of R square, you will calculate probability of happening or non-happening of an event. Sir, sorry, your voice is not clear, sir. Yes, Yes, sir. sir. Because one PC is you have You to have to mute. Then then is is the the laptop. Yes, thank you. So if my dependent variable is to check whether India will win or lose, whether people are using social media or non-social media, whether people are using artificial intelligence or people are not using artificial intelligence. If my objective is to check this, whether people are using chat GPT or not, I am checking the probability of using chat GPT or not for making assignments by the students. If this is the research paper you want to write, then you are not going to apply multiple regression. You are going to apply logistic regression. That is my objective. Logistic regression will tell you that there are only two options, 0 and 1. The visa experts in if you see those who are applying visa for Canada or other countries, so they are only investigating through logistic regression whether the student will be granted visa or not. Student is coming up with what? Student is coming up with family income, his age, his marks. These are the variables with which he is coming. For example, for a visa expert, somebody is having an office in Rohini. So he might get 400 applications. That means he has got the 400 data. So he can check how many candidates will get visa out of 400 and how many will not be granted visa. So he will apply logistic regression. He will not apply multiple regression. He will check that anybody who is above 0.50 cutoff point, if somebody is falling here, this is the top line. This is the top line. One is absolute yes. Zero means absolute no. So if anybody who is above 50 will have the more probability of getting visa. Anybody who is here, person number B is here. That means his probability is less. This student must have less probability to be granted a visa. So in logistic regression, we get the probability of happening or non-happening of an event. So binary logistic is another objective if your dependent variable. Student will pass or fail. The faculty here can take the data from the past students, 5-year data of the students, those who have passed from this institute. They can check that with logistic regression, what is the probability of this batch who has just taken the admission in August? How many students will pass and fail? With the past 5 years data, you can check whose probability is above 0.50, they are likely to pass. And whose, so logistic regression will give you probability for every student, and you can check whether students are going to pass or fail. So pass, fail, win, lose, social media, user, not user. So binary logistic is another word which you can apply in parametric test. Probit is highest order of this binary. The another one is your Y can be having more than two categories, 0, 1 and 2. I mean, 0 means India will lose the match and 1 means win the match, 2 means tie. It can tie also. So when the dependent variable is having more than two categories, and you have independent variables, then you apply which variable? You apply multinomial logistic regression, because binary means two categories, multinomial means more than two categories. Again, this will be what is the probability of happening or non happening of an event. DV has more than two categories. So in regression,
in regression, there are three options in addition to regression: linear regression, multiple regression, binary, multinomial. If your dependent variable is variable like education, if your dependent variable is having more than two categories and the variables are UG, PG and PhD, these are the three categories of variables, and this is coded as 1, 2 and 3. So undergraduate, postgraduate and PhD, I can rank them also. So in such a case, when you have more than two categories of dependent variable and you can rank them also, then you apply ordinal logistic regression. So it is the type of variable which is available in front of the researcher. So ordinal logistic regression, multinomial logistic regression and binary logistic regression are the extensions of regression. You have to realize whether your DV was metric or non-metric. If it is metric, multiple regression. If it is non-metric, binary, multinomial or ordinal. These are the two outcomes which you can apply into the research. I'm repeating it again. If your DV is 1 and it is metric, then simple regression. DV metric, IDV metric. Number 2, if you have one DV and it is metric and independent variables are also metric, but they are more in number, multiple regression. You can apply binary data also, like gender. So gender can be included provided it is binary, but if the beta is minus, if the beta is positive, minus means 0 category, plus means 1 category, and 0 can be male, 1 can be female. So if beta is minus, males are more robust, males are having more variance, or if beta is positive, females are more inclined towards customer loyalty. So in binary, you can only compare the two categories. But if your DV is non-metric and it covers two categories, then binary logistic regression is the only route. And you get what is the probability between 0 and 1. If Y is having more than two categories and it cannot be ranked, then multinomial logistic regression. Simple multiple is fine. Binary you have written. Your DV is having only two categories. And your DV is also one DV, and DV is also categorical, like yes, no. Yes, no is two categories. Yes means 1, no means 0. Visa will be given, visa will not be given, right? Student will pass or student will fail. If I want to check whether they will pass or fail and we can check the probability of happening of an event, then binary logistic is the only solution. Your DV must be non-metric and it must have got two categories only, and they has to be 0 and 1. 0 means absence of the phenomena, 1 means presence of the phenomena. Binary logistic. Software will give you both options. But if DV is 1 and categories are more than 2, then multinomial logistic regression. Okay. But the third condition is the categories cannot be ranked. Categories are independent of each other. Winning, losing, tie, these are three independent outcomes of DV. So if you see the screen, this option, my DV was 1, but the DV was having three categories and all the three categories are independent of each other. Then multinomial logistic regression is applicable. Every regression has different objective. Whether students
I mean, a lot of people apply for NEET examination. So in quota, the coaching centers, they predict what is the probability of the student whether they will clear the NEET exam or not. They will check. They must have 10,000 students into quota. So they will check on the basis of past 5 year student data that with the regression line of binary logistic, whether this candidate has got a probability of 0.7 or 0.3. Anybody whose probability is 0.7 is likely to pass NEET examination. Some student might have probability of 80. He is more. So before, I mean, at the time of admission, they are able to check whether this profile is having probability of above 50 or low 50. So binary logistic regression will give you a regression line of the past year's data of my institute. And I will fill the data of the new student and I can find out that his probability 60, 30, 20, 80, 90. So for regression is a tool of forecasting. It will give you regression line. I mean, in non-metric, you will get beta, you will get constant, you will get beta 2, you will get beta 3. And fill the data of current student. You will get the value, and that value might be 70, 50, 20, 30. So I must know in my class that what is the probability of this candidate. So I make sections accordingly. Right? Yes, medical fields, cancer survival is there or not, whether this patient will live or die. What is the probability? So if I want to check on the basis of the demographics of the patient, I can check what is the probability that in stage 2, this patient will survive or not. In stage 4, we know that the probability of death is near. But in stage 1 and stage 2, this logistic helps. What is the probability that this candidate, this patient will survive? So the options are only two. There are only two options. Win, lose, live, die, I can predict. Winning and losing are independent. But if there are more than two options, then I can say that I will investigate the same, but with multinomial logistic regression. But if I can rank them also, then ordinal logistic regression. So if you see this software, in software, this option which you are looking forward for is a classic case of multiple regression. You see, dependent variable is 1 and DV is metric and independent variable is also metric, but gender was binary. So you need the statistics, you need the R square, you need descriptives. Just have a look at simple things. Model fit R square, descriptives. Statistics. Click on statistics. अच्छा repeat कर देते हैं, ठीक है. This was our file. We know that the achievement is CGPA. CGPA is dependent upon performance goal, mastery of the subject, interest of the student, anxiety level of the student, and there is a binary data gender also. I cannot take socio-economic level because it is 1, 2, 3, but I can take gender because it is coded 0 and 1. So go to analyze. If you see regression, you now can see binary logistic, multinomial logistic, ordinal logistic also. All the three variants are there also. Right? If my DV is metric, I will go for linear. If my DV is metric, I will go for linear regression. But if my DV is 0 and 1, I will click on binary logistic. If my DV has more than 2 category, I will go for multinomial logistic. If my DV is having more than 2 categories and they can be ranked, then ordinal logistic regression. Okay. Priyanka, you need to mute your mic. Priyanka Saluja. So now we are working with linear.
click on linear, dV is 1. dV is 1. So you can put the level of achievements here. This is CGPA. If one independent variable is there, it is simple regression. dV, IDV, both are 1, 1 and both are metric, simple regression. But if the variables are more, I can call it as multiple regression. All are metric. I can take a variable which is nominal, but it is converted into binary. So I will only see whether the beta is minus or the beta is positive. I will only investigate what is the sign of beta. Minus beta means 0, positive beta means 1. 0 is male, 1 is female. So in statistics, we want confidence intervals. As you know, the p-value, I mean acceptance region, the beta must fall into the confidence interval. I need R square, coefficient of determination. I need the basic descriptive statistics of the data. Assumptions, let me just take you later. And plots. You can see that we can draw histogram and normal probability plot. Normal probability plot, the residual must be normally distributed. In regression, the first assumption is residuals must be normally distributed. It is not the data. For example, astrologer says that tomorrow there will be rain, and tomorrow it actually rains. That means he is a good astrologer, right? Every day there is a forecasting coming by an astrologer. If he says that tomorrow your day will be bad and this will happen to you, you might met with an accident. The sun sign, who is Virgo, they are going to meet an accident tomorrow. Take care. And he actually met with an accident. That means his prediction was good, right? That means there is no error into his prediction. His actual prediction and the actual happening of an event both coincide. That means his error was less. But if he says that accident will happen and it happens that small, I mean nail is there is small accident happen, दरवाजे के बीच में आ गया और छोटा accident हो गया, minor. That means he was forecasting something big, but I met with a very less. That means what he is saying and what has happened to me, there is large difference between. And if it never happens anything, that means the error, the prediction was less, prediction was there and higher errors were there. So those errors must be normally distributed. That should also behave normally. So this normal probability plot will come for residual plot. Regression has got 4 assumptions. Regression has got 4 assumptions. The first assumption is residual must be normally distributed. So this has to be there. Number 2, there is no multi-collinearity. Let me just write here, then I'll continue with this slide. Regression has got 4 assumptions. Assumption number 1, residual must be normally distributed, right? Y is equal to alpha plus beta 1 x1 plus E, right? With this equation, we get predicted Y. This Y is actual Y and this is predicted Y. Have you seen the line of best fit? Books में line of best fit का नाम सुना होगा. These dots are actual sales. These dots are actual sales. And I draw the line of best fit. Let us say 400 data sets of sales are there. And I have drawn the regression line. This is Y. So any difference between Y and predicted Y goes into residual E. This E must behave like this. Okay. If this E is not behaving like this, that means I am bound to apply known parametric test. This is parametric. So I have to understand whether this residual is behaving normally or not.
So with this, so never ever say that in regression data is normally distributed. Data is not normally distributed. This error must be normally distributed. What is error? Some values are above the predicted line. Some are below. This is standard error. This is so if the astrologer is saying something and it is not happening, that means error will be high and prediction forecasting is low. In stock market, if I say that the pharma sector stocks will rise tomorrow, if they rise, then I will become a person like Jhunjhunwala and I will become rich. Nobody is going to work anything. They will be engaged into this because their forecasting is good that tomorrow pharma sector shares will be high. So I will buy today pharma sector and tomorrow I can earn 1 crore rupees or 100 crore rupees I can earn tomorrow. So in stock market, the 2% or 5% R square matters. It is very difficult to determine Bombay Stock Exchange. So 2 to 5% R square is also good R square because that will make you rich. Understand what is R square? So you need to find out which variable is contributing to Bombay Stock Exchange. All these finance people, they are working on this time series data with this forecasting of Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange with different variables. And they get higher E. So error should be normally distributed. This is first assumption. And number two assumption is assumption number two. There should not be multicollinearity. We work with related variables, but that correlation should not be so high. Should not be so high. Otherwise, it will create a lot of problems. So multicollinearity cannot be removed totally. Multicollinearity, I mean, if we say that I am not suffering from any disease, it is not, something is there, but within the tolerance levels. So that body can live with 80, 90 years or 100 years. So every body suffers from some disease, right? Even for a healthy person, there is something within the tolerance levels. Similarly, in regression, multicollinearity, because we work with related variables, so some correlation will be there, but high correlation should not be there. So we check whether the variance inflation factor is less than 5 or not. VIF is the formula which tells that it is well within the tolerance limit or not. Correlation is within the tolerance. What is VIF? What is the formula of VIF? 1 by 1 minus R square. So you calculate your R square and solve this formula. There will be some value. So this should not be more than 5. And liberally 10. Liberal method. Joseph Ayer's book is there. So multivariate data analysis. So in here book, they have said that multicollinearity will be there. You cannot remove, but it should be less than 5. 1 upon 1 minus R should be less than 5. And if it is less than 5, you can say my regression is free from multicollinearity. Collinearity will be there, but tolerance limits. Assumption number 3. What is assumption number 3? Assumption number 3 is autocorrelation. You know the data of Bombay Stock Exchange? That is say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Bombay Stock Exchange. Let us say 78,000, 78,500, 76,000, stock crashed, 77,000, 1,000 up, and 77,500 market closes. Every day's Sensex is dependent upon previous day. Previous day. What was the previous close? What is the previous close? That means every data has some correlation. Every error has some correlation with the previous year, previous date. Same is with the gold prices. Today's gold prices is also related to the past gold prices.
पहले कितना था, कल कितना था, पिछले हफ्ते कितना था, पिछले महीने कितना था, what was the gold price of last year, what is the gold price of last 10 years, what is the gold price of last 20 years. Gold is one commodity which is I mean forever kind of metal which people are going to apply. So in a time series data, the problem of multicollinearity exists. In cross-sectional, multicollinearity is not an issue because we are collecting data for a particular period of time, 2 months, 3 months. So when we collect data for 20 years, 30 years, 15 years, 5 years, then you have to investigate that autocorrelation should not be there. Autocorrelation is written AC. AC should not be there. In cross-sectional research, these two are investigated. My residual should be normally distributed and there should not be multicollinearity of the variables. Last one is assumption number 4, heteroscedasticity. My error, this error should be a dead error. Residual, you see that residual is there. What I am saying and what I am predicting, there is something gap is there. That gap is error, residual. That residual should be a dead residual. If the residual is volatile, variance should be 0. If it is volatile, if it behaves like this, that means something is there in the residual which I have not collected as independent variable and I have missed some important variables. My error should be a dead error. Variance should be minimum. So plus minus 3 standard deviation, right? That is the maximum tolerance limits with which it can go. So if it goes beyond plus minus 3 limits, then there is a problem of heteroscedasticity. This problem exists when you are dealing with the panel data. Panel data means you are investigating 100 companies for 5 years. 100 companies, 20 companies of textile, 20 of pharma, 20 of auto sector, 5 sectors you have taken and 100 companies are there and last 5 years data. 5 year means time series, 100 companies means cross sectional. When time series plus cross sectional data is there, it is called as panel data. In panel data, we handle the problem of heteroscedasticity. There should be homoscedasticity. For example, BRICS nation. What is BRICS? Brazil, Russia, India, China, South Africa. These are 5 countries. If I collect the data for the last 20 years, how BRICS has performed in the last 20 years for some independent variable and the dependent variable. So I am going to work with panel data. 5 countries, 20 years, and some independent variables. So in such a scenario, we have to investigate whether the residual has some volatility or not. It should be dead error. So in regression, all the 4 are going to be investigated and the option is given straight away. You see that uh, first is over there. Standardized residual plots. Residual should be normally distributed. When we will get the output, you will get a residual. Are they normally distributed or not? Continue. In statistics, collinearity diagnostic, multicollinearity will be investigated by collinearity statistics. It will give you VIF value. Multicollinearity, assumption number 2 is going to be investigated here. Assumption number 1, plots. Assumption number 2, collinearity, you will get VIF. You have to say it is less than 5. Durbin Watson is going to check autocorrelation. Although it is cross-sectional, but still, write down the range of autocorrelation is plus minus 4. And the ideal Durbin Watson statistics should be 2. Minus 2 plus 2. 2.
The value is 2, it can be minus 2 plus 2. The total range is 4. The statistics, Durbin-Watson statistics is 4. And the 2 is supposed to be an ideal value, which will state that there is no problem of autocorrelation even in my cross-sectional data. Right? Fine. Continue. In plots, I have given you a PPT running and interpreting multiple regression in SPSS. These options, which I am telling you now, I have made a screenshot of every box and given in this PPT. Right? All the screenshots I have applied here. So you can see, for example, where is the regression? So this is the screenshot. What to put under dependent variable, what to put under independent variable. Next screen, you need to click on statistics, click on model fit. You need collinearity, right? If you want to check on collinearity, you will get VIF. You can check outliers also. Outlier option is also there. Anybody who has got more than 3 standard deviation, software will give you that this person is outlier. You can click on histogram and normal probability plot. We have clicked on this thing. Okay. But hetero, fourth assumption is hetero. You want to check whether your residual is dead or not, variance is there or not. Just see what is there in Y, what is there in X. The studentized residual. Residual is plotted on Y-axis. Y-axis. Residual is plotted on Y-axis. And what is plotted on X-axis? This is predicted Y. Predicted Y. These are two things which you have to plot. Let us go to the software again and go to plots again. What is to be put under Y? Residual. S studentized residual. And what is to be predicted on X? You need predicted Y. One is actual Y, one is predicted Y. Always remember the case of astrologer. One is actual, one is today, what he is saying. I mean, today is 25. This is actual Y. 26th of July is predicted Y. Right? So this predicted Y. So with this, you are going to get whether your residual is normally distributed or not. Go to continue. Option is okay. If there is no options, save. You need to save. You need to save the predicted values, standardized, unstandardized, and residual, both residual. Okay. So click on OK. Now you should see that this is the case of regression. Today we are dealing with multiple regression. Tomorrow structural equational modeling will be handled. SAM will be handled. SAM comes after this multiple regression. Okay. And for metric data, it will happen. Entire day, you will be dealing with multiple regression and you will be dealing with metric data only. So this is model summary. You only need to report R square. What is R square? Look at model summary. R square is 41, 41.2, 41.2. I have determined variance in CGPA due to these 5 variables. Mastery of the subject, interest level of the students, all the 5 variables I have entered. Fine. So whether the p-value is less than 5% or not, just see p-value is less than 5%. So I will say that what is null hypothesis in regression?
What is the null of regression? This regression, multiple regression. That is for coefficient. For regression model, entire model. Difference, are we checking difference? No. Relationship is correlation. Impact. Impact. Mastery leads to CGPA. Interest leads to CGPA. Anxiety level leads to CGPA. So there is no impact of independent variables on the CGPA of the students. There is no impact. If I say relationship, I'm talking about correlation. If I'm say association, I'm talking about chi-square test. Influence also. Right? So 41.2 and model is significant. Model is significant. Just focus only on coefficient. Just focus on coefficient. Let me just paste it into Excel. Now I guess the screen is more visible to you. Look at the p-value. Look at the p-values. Which p-value is significant? Performance goal. Performance goal is significant. That means performance goal is significant and the p-value is less than 5%. Right? It is important variable. Mastery of the subject is important. Yes. Interest of the subject. Yes. Anxiety is not. But if the teacher focus on anxiety, he is wasting his time. Anxiety is not an important predictor of CGPA here in this data set. So what is the beta of gender? Minus represents zero category. Zero means males. That means males have got more CGPA. वही हमने निकाला था शुरू में सुबह. Males, boys were better than the girls. So minus का बीटा males की तरफ है और males are more gaining the CGPA in comparison to females. If beta was positive, that means females का score ज्यादा है CGPA का. So for binary data, we only compare with the sign. But is there any significant difference? The answer is no. The answer is no. There are two variables are insignificant. Two variables are insignificant, but three are significant. Which is the most important? Which is the most important variable? Which mastery? How you have investigated that this is rank 1? Which beta value? There are two beta values. One beta is unstandardized beta, another beta is standardized beta. This is unstandardized beta, this is standardized beta. We do ranking. We do ranking with standardized beta. Remember always that standardized beta is applied to rank the variables. There are two types of beta. This is applied for ranking. And what is the purpose of unstandardized beta? Line of best fit बनाते हैं. Line of best fit is prepared with unstandardized beta. This is used for forecasting. Line of best fit किससे बनती है? Unstandardized beta से. Right? And ranking is done with standardized beta. So now you see mastery is having beta of 357. You must have used 325. It is not. You have to see 357. This is rank 1. 276, rank 2. 153, rank 3. And anxiety level, rank 4. This is multiple regression. And this is
not correlation. This is checking the impact of A variable on B. The total variance was coefficient of determination was 41%. But who is contributing more to that 41%? Mastery, followed by interest, followed by performance goal, and then anxiety. So a faculty has to focus first on mastery of the subject. So which variable I have to focus first? पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ऑर्डर में हाईएस्ट पॉजिटिव टू हाईएस्ट नेगेटिव और रिपोर्ट करना है तो अनस्टैंडर्डाइज का दैट वन यूनिट चेंज फॉर एग्जांपल मास्टरी को मैं रिपोर्ट कर देता हूं स्टैंडर्डाइज इज फॉर रैंकिंग बट हाउ टू रीड अनस्टैंडर्डाइज इफ वन यूनिट ऑफ मास्टरी इज इंक्रीज्ड आपका लेवल 35 से 36 कर दिया आपकी मास्टरी बढ़ गई 1 यूनिट तो सीजीपीए कितना बढ़ जाएगा 0.32 बेसिस पॉइंट्स पे सीजीपीए इंक्रीज हो जाएगा आपका अगर सीजीपीए 6 है तो वो हो जाएगा 6.325 अगर टीचर आपकी क्लास में एक्स्ट्रा कोचिंग करके आपका 1 यूनिट मास्टरी बढ़ा देता है तो आपका सीजीपीए कितने से बढ़ जाएगा 3 to 5 बेसिस पॉइंट्स पे सीजीपीए बढ़ जाएगा बट इफ टीचर फोकस ऑन दिस इंटरेस्ट तो 1 यूनिट इंटरेस्ट बढ़ाने में सीजीपीए कितनी बढ़ जाएगी 19 बेसिस पॉइंट सीजीपीए बढ़ जाएगी बट परफॉर्मेंस गोल हैज गॉट इनवर्स रिलेशनशिप अगर हम परफॉर्मेंस गोल के ऊपर काम करेंगे तो सीजीपीए कम हो जाएगी तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है 1 यूनिट ऑफ परफॉर्मेंस गोल अगर हम बढ़ाएंगे अनरीजनेबल गोल सेट कर देंगे किसी का तो उसकी सीजीपीए 0.01 बेसिस पे गिर जाएगी कई स्टूडेंट्स होते हैं उनका गोल जबरदस्ती बढ़ा देते हैं नहीं तेरे को ये भी करना है ये भी कर वो भी कर इन दैट केस व्हेन वी अननेसेसरली इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ परफॉर्मेंस गोल सीजीपीए ड्रॉप्स ये बच्चे कह रहे हैं isn't it? तो माइनस बीटा को ऐसे रिपोर्ट करना है 1 यूनिट इंक्रीज this much basis points CGPA will decrease. पॉजिटिव है 1 यूनिट इंक्रीज इतना यूनिट इंक्रीज तो पॉजिटिव बीटा नेगेटिव बीटा वो कुछ और है IPM is different that we compare who are important who are performing उसमें 2 इंडाइसिस काम करते हैं इसमें एक ही है हाँ अनस्टैंडर्डाइज पे होगी लेट मी मेक रिग्रेशन इक्वेशन आल्सो फॉर ऑल सिग्निफिकेंस हाँ ओके standardize you know that standardize x minus x bar divided by my standard deviation I can do standardization I can compare faculty with the student intelligence level of faculty with the student provided standardized score of faculty and standardized score of students are there then I can compare although they are incomparable but with their standardized score of intelligence we can compare right but forecasting line of best fit is created like y is equal to 2.357 constant this is constant now you know where the value of constant is coming okay constant is this constant is 2.357 forecasting and line of best fit is created from this box y is equal to 2.357 next beta is what minus so I will write minus 0.010 and in the bracket I will write performance goal. Next beta is positive plus 0.325 multiplied by mastery plus 0.198 interest of the student
minus 0.023 into anxiety of the student minus 0.235 gender. Okay. From the last year class, this is the class of 60. I have now created a regression line. Now this class, this class is going to come, I can forecast in August itself what will happen to these. The behavior of the students of this institute is captured into this equation. Now if I put this year batch, student number, roll number 1, and roll number 1 was a female. Okay. Roll number 1 was a female. She came and she is granted roll number 1. I want to check what will be the probable CGPA of this roll number 1. So I will use this equation. I will write like y is equal to, now I have to see what is the metric for goal. Goal is into 0 to 100. You see, goal is into 32, 32, 60. Goal was rated under 0 to 100. For example, this girl says that my goal, she says my goal is 50. Out of 0 to 100, my goal is 50. I have made my goal which can capture it up to my capacities of 50. 0 to 100, 50. Next is mastery of the subject. Mastery of the subject is rated between 0 to 10. Interest 0 to 10. Anxiety 0 to 10. So remember these 3 parameters. She says that my mastery is 7. She says my mastery is 7.0. And she says I have very good high rate of interest level in the studies. She said 8.0. I have got very good interest. And then she says my anxiety levels are very less. 2 is my anxiety level. And she is a female. She's a female, so she will be put as 1. If he was a boy, then 0. If male, then 1. If male, it is 0. For female, it is 1. Now solve this equation, you will get the CGPA of this roll number 1. So the regression line is applied to forecast the future. Regression is meant to forecast the future. Last 5-year data, this is 60 students data. Last 5 years data can give you a regression equation, and you can put, this is how visa agents, they have got 10,000 students in their clients. So they make regression equation, and whenever new client comes, they put the data of the new student, and they know that this is the probability. They already know the probability. Then they try to encash that person. Ranking. Which parameter I have to work first in order to improve? Greater influence. So that means this is what she will get. Okay, she will get. But if I work on this candidate more, which variable I have to work more? Mastery. I have to work on mastery now. So Control C. Just put it here. Control V. If I work on mastery and I improve the mastery from 7 to 9, this girl seems to be intelligent. If I improve her mastery from 7 to 9, CGPA will robustly increase. But if I work on anxiety, it's not going to increase. My objective is to increase CGPA. So I have to work on mastery first. Then her CGPA will considerably increase. What she is expecting right now from her requirement, this third equation, I am working on now my mastery. So I will train my faculty, improve mastery of the subject. From 7, she says 7, it should be 9. The result will be greater CGPA.
So this is how Sachin Tendulkar kind of people are, Virat Kohli. If they have got 94 centuries, how to get 95th century, which is difficult. A topper who is getting 95%, it is very tough to improve to 95, 96. But a normal student, 40% marks, he can get 65%. Case-wise regression forecasting is done. Na? Forecasting is done case-wise. You have got new class. Will you not forecast 60 students? They are your client. So overall on 60 clients, I have to work mastery. Overall on my clients who is coming to this class, I have to overall work on mastery first, then interest, then performance goal. But if you see, when I will work on this for all the 60 students, their CGPA will improve. But if I work on interest first or anxiety level, I appoint psychologist, I'm wasting my time. It's not going to help a lot. Anxiety is only, you can say, and moreover, it is an insignificant variable. Nobody should work on insignificant variables. Work on significant variables. The best regression equation will be excluding anxiety and gender level. तो और अच्छी इक्वेशन बनेगी. ये टोटल इक्वेशन. Red values are, you can skip them for forecasting. तो significant बताने चाहिए. Yellow ones. हाँ जी. Yes, then CGPA will only, that means I'm working only on the productive variables. On unproductive variables, it's not going to help a lot. इनके बिना भी मेरी CGPA आ जाएगी. They are insignificant variables. Gender is not, male and female are same, or boys are slightly better than girls, slightly better than girls. So this is all about regression. Okay. CGPA improve होगा. DV, डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो काम हो रहा है ना. हमारा ऑब्जेक्टिव आर स्क्वायर तो इंप्रूव होगा ही होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माय सीजीपीए. दैट विल बी इंप्रूव्ड. हाँ, तो वो तो सबके लिए अपनी थ्योरी बन गई. फिर तो वो तो हम थ्योरी बन गई और सबको बांट दो. फिर देन यू आर द एडम स्मिथ. ओके. नहीं होता, कभी भी नहीं. सिग्निफिकेंट और नॉट. नेगेटिव. Okay. For example, now just see on the screen. Everybody should see on the screen. Let us say quality of the product. If my product is iPhone, it has got some quality. That means it is leading to customer satisfaction, right? Customer satisfaction is leading to customer loyalty, right? Good quality of the product generates trust level of the users. With higher trust, they are also loyal to the organization. Quality also drives. iPhone user will definitely go to next buy of iPhone also, right? If somebody has got iPhone 12 version, he will buy iPhone 17 version. Definitely, because quality is tremendous. Good is quality. Sony. So such kind of brands. So now this is my Y1. Okay. This is my Y2. And this is my Y3. Am I three dependent variables? Am I correct?
Okay. This This is is why thing is somebody somebody has to tell. Thank you. These are called as latent variables. Latent variable means unobserved variables. We measure them with the items. Okay. So customer satisfaction is my X1, trust is my X2, quality is my X3. There are three dependent variables and there are three independent variables also. X1 is customer satisfaction, X2 is trust, X3 is quality. There are three dependent variables and there are three independent variables. And trust is also acting as a mediator. Customer satisfaction is also acting as a mediator. Team relationships हो गए. Customer satisfaction is acting as Y2. It is also acting as X1. It is also acting as a mediator. In such a relationship, we are supposed to go for SEM. SEM is nothing but higher order of regression. It is nothing but regression. Nothing but regression. You have to check residue should be normally distributed. You have to check multicollinearity. These are the two things in cross-sectional study which you have to report. Your focus is on R square of loyalty. Researchers are happy to get 3 R squares. Trust ka R square, customer satisfaction R square. Not required. It's a loyalty model. It's a loyalty model. You have to say, I am working on loyalties. Your title of the research paper should be written on loyalty. People are happy with writing variables of IDV, but it's a loyalty model. R square, forecasting, prediction, everything is to be done on loyalty. It's a loyalty model. So remember, when SEM is applied, when there are multiple dependent variables, how many are Y1, Y2, Y3, and they are related to each other. Can you see the relationship? What is the relationship? Trust is leading to loyalty. Satisfaction is leading to loyalty. Quality is independent. It is not dependent. It is only independent. Set trust also leads to customer satisfaction. If I have got high trust, I will be more satisfied, right? So literature will suggest you whether customer satisfaction leads to trust or trust leads to customer satisfaction. In scopus.com, you have to put the variables like trust and customer satisfaction. You will get research papers. You have to read those research papers and find out whether trust leads to satisfaction or satisfaction leads to trust. I am creating this diagram to represent that A leads to B. But the hypothesis number one, that quality leads to this one. Quality leads to customer loyalty. This is hypothesis number one. You are the one who are supposed to find out from scopus.com and find out what is the hypothesis. What is the relationship of quality and loyalty? You will tell. Because you are the one who is going to write a paragraph, 15 lines, 20 lines you are going to write, and you have to mention 8 to 10 papers into that paragraph. You have to write a paragraph and the name of the paragraph will be quality and loyalty. So you will find out research papers, 8 to 10 research papers. You have to mention what literature is saying and what has been done by others in quality and loyalty. Then you will say on the basis of these papers, I am hypothesizing that quality leads to customer loyalty. एक मैं पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूं.
this is one paper on celebrity endorsement and stock investment intentions, right? Celebrity, how celebrities like Amitabh Bachchan is coming and how they are affecting the investment decisions. Look at this one paragraph. This one paragraph, how it is written, 15 to 20 lines. Stock selection by retail investor is often the first step while making investment decision in a financial market. This paper has said this thing. I have borrowed this line as a conclusion, moral of the story from this research paper. This is the gross line. Funnel approach, have you understood what is funnel? बड़ी से छोटा करते आते हैं हम. तो सबसे पहले ग्रॉस बात करते हैं. सबसे पहले यू टॉक अबाउट द ग्रॉस थिंग्स. दैट स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए. तो जायोवा ने बोला था ये. The investors try to evaluate many parameters like type of industry, analyst की क्या रिपोर्ट है, कंपनी मैनेजमेंट कैसी है. तो हुआंग और जायोवा ने ये बोला. मैं फाइनेंशियल रेशियोज भी पढ़ के इन्वेस्टमेंट करता हूँ. ठाकुर ने बोला टू फैसिलिटेट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस. छोटी बात हो गई. In this regard, there is a dearth of literature assessing the impact of celebrity endorsement, and the products endorsed are investigated on the financial implications for retail investor. बड़ी कम रिसर्च हुई है कि सेलिब्रिटी कैसा लॉन्च किया कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने, और मैंने टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी. सेलिब्रिटी, यू सी, मारुति बेलिनो इज लॉन्च्ड बाय रणवीर सिंह. दैट टू फाइनेंशियल मार्केट जब नीचे गिर रही थी. इसका मतलब मारुति में बात थी कुछ, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे थे. ये बहुत अच्छा सिग्नल है. गिरती हुई मार्केट में आप बेलिनो को लॉन्च कर रहे हो विद रणवीर सिंह, जो कि उस टाइम पे सुपर हिट चल रहा था. दैट मींस अ गुड साइन. आई शुड इन्वेस्ट इनटू मारुति. तो ये ऐसी रिसर्च बड़ी कम हुई है. तो जहां हुई भी है तो वो है डिंग, ये दूसरे कंट्रीज में, कैंग, प्रेंटिस एंड जैंग ऑस्ट्रेलिया में. ये दुनिया के इन कंटेक्स्ट में. फिर celebrity can send a positive signal to people like me and you, retail investor, that the firm is financially sound. मुझे ये बहुत देखने की बात है कि फर्म साउंड है, क्योंकि उसमें तो रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन आ रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है, राइट, विराट कोहली को मैं लेकर आ रहा हूँ एडिडास के लिए. सो सेलिब्रिटी कैन गिव अ पॉजिटिव सिग्नल एंड दस दे कैन इन्वेस्ट इनटू ब्लू चिप कंपनीज. तो ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर ये स्टडी है, ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर ये स्टडी है, हाई बीटा स्टॉक्स के ऊपर ये है, और सीजनल स्टॉक्स के ऊपर ये है. ये मेरे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. माय कंस्ट्रक्ट नेम इज स्टॉक सिलेक्शन, और इसकी 4 आइटम्स कौन सी हैं? ब्लू चिप कंपनी, ग्रोथ स्टॉक्स, हाई बीटा स्टॉक्स, सीजनल स्टॉक्स. और ये यहां से लिए गए हैं. The present study intends to measure final response of investor towards stock selection on the basis of financial health and brand image. These signals, जो ये सेलिब्रिटी से सिग्नल आ रहा है, इससे मैं कॉर्पोरेट के रिजल्ट को प्रोजेक्ट कर सकता हूं और इनमें इन्वेस्ट कर सकता हूं. तो क्लार्क मर्फी ने ऑस्ट्रेलिया में ये बोल दिया है. Therefore, I also hypothesize that celebrity endorsement influence the stock selection of retail investors. कहानी बिल्ड करनी है आपको, बड़ी बात से, छोटी बात से, छोटी बात से आते आते आते. Therefore, so 8 to 10 papers are good enough in one paragraph, and every story has to be sold like a hot story. अगर 7 हाइपोथेसिस है, सातों को आप चाहे 1 महीना लीजिए, 3 महीने लीजिए, but all the 7 hypotheses must be good hypothesis. पेपर इस पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है. ठीक है, अगर यहीं पर यहाँ फंबल करके देन यू आर गॉन. फिर कोई आपकी स्टोरी पढ़ेगा ही नहीं, इंट्रोडक्शन के आगे नहीं पढ़ेगा, यहाँ तक भी नहीं आएगा. सो नाउ यू सी दिस पेपर एंड सी हाउ वी बिल्ड दी स्टोरीज. ये स्टोरी कुक करने में, बनाने में आपको पेपर पढ़ने की जरूरत है. तो स्कोपस में आप वर्ड डालिए स्टॉक सिलेक्शन एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. यही मेरा पेपर था. सो एनी पेपर इफ यू वांट टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी लाइक दिस. देन यू से कि मैंने हाइपोथेसिस बनाया, क्वालिटी लीड्स टू कस्टमर लॉयल्टी. तो क्वालिटी और लॉयल्टी के बारे में बात करिए. किसकी स्टडी? अगर स्मार्टफोन के ऊपर कर रहे हैं तो स्मार्टफोन की दुनिया में क्या काम हुआ, किन वेरिएबल्स पे काम हुआ, किन पे काम नहीं हुआ, और दुनिया क्या कर रही है. इसलिए मैंने हाइपोथेसाइज कर दिया कि क्वालिटी से लॉयल्टी.
तो ये एक कहानी बनाने के लिए यू हैव टू रीड पेपर्स, डाउनलोड पेपर्स एंड मेक अ स्टोरी लाइक द बेस्ट स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रू। वो आज तक की बेस्ट स्टोरी है क्योंकि बहुत अच्छे से लिखी गई है और उसका मॉरल भी बहुत अच्छा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। तो हाइपोथेसिस इज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड यू हैव टू कुक द स्टोरी। तो ये जब ऐसा सिनेरियो आता है तो आपका लगता है सेम, बट इफ y1 y2 y3 are not related to each other, then you apply manova. Then you apply manova. Manova is the test which is an alternative test when trust, customer satisfaction और लॉयल्टी का आपस में लेना देना नहीं है। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाऊं, just see, if I create the diagram, customer loyalty, customer satisfaction and trust, तो क्वालिटी है और एक और वेरिएबल है, x क्वालिटी एंड y। लेट अस से दिस इज परसीव्ड ईज ऑफ यूज, दिस इज परसीव्ड यूटिलिटी। इफ आई से ये इसको भी लीड करता है, इसको भी लीड करता है, ये इसको भी लीड करता है, क्वालिटी से ये तीन बनते हैं, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, देन आई विल गो फॉर मनोवा। But loyalty, satisfaction and trust are not related to each other. My independent variables are leading to the three dependent variables, but three independent variables are independent of each other. In such a scenario, MANOVA लगेगा नहीं। इसमें कस्टमर लॉयल्टी और थ्री सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन से आप तो तीन मल्टीपल रिग्रेशन लग जाएंगे, उससे भी काम हो जाएगा। सैम में हो सकता है बट उसका कोई हाँ पर्पस नहीं सॉल्व होगा, करेक्ट नहीं है वो। यू कैन ऑलवेज बी चैलेंज्ड, व्हाई यू हैव नॉट वर्कड लाइक एक्स क्वालिटी एंड परसीव्ड यूटिलिटी। लगाओ तीन रिग्रेशन इक्वेशन, बट आपको इकट्ठे इसको लेके इन तीनों को भी मेजर करना है तो देन मनोवा। बट इफ द सिनेरियो सेज दैट ये भी आपस में रिलेटेड है, देन structural equational modeling. So tomorrow is your day for structural equational modeling. सर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के लिए मनोवा को कैसे यूज कर सकते हैं, प्लीज बता दें। श्वेता मैडम, मैं बताता हूँ इसका भी। in MANOVA you can also take demographics. The best part of MANOVA is you can also take demographics, but in binary data. Okay, ओके सर। you can take demographics, that is the best part. You can take metric data as well as non-metric data, दोनों डेटा आप ले सकते हैं इसके अंदर, मेनोवा के अंदर। But in SEM you can take like gender, but gender has to be coded 0 and 1 and gender on loyalty as a control variable, not as ID, while controlling the effect of gender, how trust satisfaction. So इसमें हाइपोथेसिस कितने बनेंगे? लेट अस से हाइपोथेसिस नंबर 1, क्वालिटी से कितने एरो जा रहे हैं? 3, राइट। सो यू विल राइट H1A, H1B, H1C। क्वालिटी से कस्टमर लॉयल्टी, क्वालिटी टू ट्रस्ट एंड क्वालिटी टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देन H2A, H2B, trust leads to customer loyalty and trust leads to customer satisfaction. और कितने बन रहे हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन से जा रहा है कुछ, H3 customer satisfaction to customer loyalty. Now refer to hypothesis number H4. H4 का मतलब है quality leads to trust and trust leads to customer loyalty. ठीक है, mediation. This is H4A. Then you write H4B. Quality leads to customer satisfaction, leads to customer loyalty. This is a H4 will be a hypothesis for mediation. ठीक है,
mediation. And there is a fifth hypothesis also, H5. वो क्या है? Quality to trust to customer satisfaction to customer loyalty. This is hypothesis for mediation, and this is hypothesis for serial mediation. Right? Mediation, I have given you one PPT for mediation. Let me just quickly show you that mediation. Yes, yes, sir. दो 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 करके, हाँ। तो आप उसी के लिए तो आप नॉवेल्टी लेकर आ रहे हैं। A to B, B to C तो हो गया। So then you will say that in order to plug the gap, therefore we are doing research that whether it becomes as a mediator between the two or not. तो टू टेल्ड पे वही तो चेक होता है, इट मे और मे नॉट बी अ मीडिएटर। वन टेल्ड नहीं बना रहे हम इसका, हम टू टेल्ड बना रहे हैं। इसलिए हम टू टेल्ड बना रहे हैं बिकॉज ए टू बी पेपर्स हैं, बी टू सी पेपर्स हैं, बट एबीसी का पेपर नहीं है। इन ऑर्डर टू प्लग दैट रिसर्च गैप, दैट इज द रिसर्च गैप विच यू आर इंटेंडिंग टू अप्लाई। इसीलिए तो आप रिसर्च कर रहे हैं कि ये नहीं है। तो अगर कोई बोले कि आप ये नहीं कर सकते तो दैट इज रॉन्ग। आप बोलिए कि आई एम वर्किंग विद टू टेल्ड टेस्ट एंड आई एम इन्वेस्टिगेटिंग दैट whether we are investigating whether this acts as a mediator or not. That is why we are investigating. So ये जो आपकी mediation है, mediation, this is simple mediation when there is one mediator, simple, x, m और y. और hypothesis बनेगा whether m acts as a mediator between x and y. Simple. When there are two mediators but not related to each other, then it is parallel mediation. तो एक पेपर बनता है पैरेलल mediation का। When x leads to m1, m2 and y, ये भी दी हुई है पीपीटी, मैंने आपको दे दी है, ठीक है। So the x to m1, m1 to m2, m2 to y, तो ये सीरियल मीडिएशन है जो अभी हमने H5 बनाया था। क्वालिटी से ट्रस्ट, ट्रस्ट से सेटिस्फेक्शन, देन लॉयल्टी। तो सीरियल बनाना बीच में, तो सीरियल मीडिएशन भी एक नॉवल गैप है जो आप इन्वेस्टिगेट करने वाले, और उस रिलेशनशिप का नाम है डी। डी मींस क्या m1 m2 को लीड करता है, इसका पेपर नहीं होगा। तभी तो आप काम कर रहे हैं सीरियल मीडिएशन पे। और सिर्फ m1 टू m2, डी इज इंपॉर्टेंट। सीरियल मीडिएशन का काम डी पे टिका हुआ है, डी के ऊपर। सो दैट मीन्स सर अगर इसका हाइपोथेसिस हम फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम कोई प्रूफ नहीं देंगे बिकॉज हमारे पास पेपर ही नहीं है। पेपर नहीं ना है उसका, हाँ, उसका प्रूफ करना right, Shweta madam? So you will write that x to m1 is there, m2 to y is there, x to m2 is also there, and m1 to y is also there. जो a1 a2 b1 b2 लिखे हुए हैं कॉम्बिनेशन में और c है, so you will say that m1 m2 serially mediates between x1 and xy. This is what we are hypothesizing to plug in the research gap available in the existing literature. हाँ, तो वेरिएबल्स का तो आपस में कोई भी किसी भी कंटेक्स्ट में डिफरेंट रिलेशनशिप है। He says that it may happen that customer satisfaction comes first and trust. That literature will give you. फिर वो मीडिएशन ही नहीं है। That trust leads to customer satisfaction. Leads to trust. But A1 का रिलेशनशिप तो होगा ना आपके पास, that X leads to trust and X leads to satisfaction also, ठीक है। और ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन ऑल्सो लीड्स टू लॉयल्टी, वाई के ऊपर होगा। तो आप ये आपको फिर लॉजिकली एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, वेदर ट्रस्ट इज m1 और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज m1। फिर आपको सेपरेट एक स्कोपस में जाइए, कीवर्ड डालिए ट्रस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड स्मार्टफोन्स, इनके बीच में क्या है।
तो एरो इधर का उधर जाएगा कि उधर से इधर, दैट लिटरेचर विल टेल यू। नहीं, वो होगा जेनेरिक सेंस में किसी और फील्ड में होगा। स्मार्टफोन में नहीं होगा तो फैंस में होगा, कहीं ना कहीं होगा। सो सीरियल मीडिएशन एंड लास्ट इज मॉडरेटेड मीडिएशन। बिना मॉडरेशन की, मॉडरेट करता है, मॉडरेशन के लिए भी चाहिए। हाँ, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो बता सकते हैं, हाँ नहीं आता, जरूरी थोड़ी कि वो आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जाए ना तब भी पेपर है। ए कैटेगरी है। एक प्रोफेसर है रसूली मनीष, रसूली मनीष, he has now joined in Australia, earlier he was in Malaysia, so his paper is on world heritage sites, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जैसे हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, तो ही हैज गिवन पेपर ऑन 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ मलेशिया। सारे इनसिग्निफिकेंट है हाइपोथेसिस। सो गिविंग इनसिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस इज आल्सो अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन राइट प्रोफेसर रसूली मनीष एंड फाइंड आउट इन स्कोपस, हिज पेपर्स आर आई मीन रिटन विद दिस ट्रैजेक्टरी कि इनसिग्निफिकेंट भी हैं तो भी अच्छी एक रिसर्च है। यूएस में तो ये मॉडरेटर है, एशियन कंटेक्स्ट में भी ये वेरिएबल मॉडरेटर है, क्या हमारे वेरिएबल कंटेक्स्ट में भी ये मॉडरेटर है? अगर नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट रिपोर्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी होना ही चाहिए जो अमेरिका में हो रहा है। यू से दैट दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच आर कॉन्ट्रेरी टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। मेरे में मॉडरेटर वो नहीं आया। मॉडरेटर का कहीं ना कहीं तो आपके मॉडल पे कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना। हाँ, कुछ है तो आप उसको ले सकते हैं। अब वो सिग्निफिकेंट नहीं आया वो आप रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन उसका रिलेशनशिप ही नहीं है फिर मत लीजिए। सिग्निफिकेंट वो तो, सिग्निफिकेंट तो स्टैट्स बताएगा, सॉफ्टवेयर बताएगा, लेकिन उसको लेना है और नहीं लेना है वो रिसर्चर की कॉल है कि लिटरेचर में उसको मिला कि नहीं मिला। तो लिटरेचर सपोर्ट होनी चाहिए उसको लेने के लिए। इंट्रोडक्शन में कहानी बनाई होगी कि इसको क्यों लिया गया। इंट्रोडक्शन इज द पेज वेयर यू हैव टू चेक। मॉडरेशन के जितने पेपर लिखे जाते हैं, मैं इसको बताता हूँ कैसे। एक कुंभ मेला का पेपर दिखाते हैं आपको। ये डिस्कशन यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू टुमारो, बिकॉज कल भी यही बात होने वाली है। सो जस्ट हैव ए लुक एट दिस मॉडल। ओके, मॉडल दिखा आपको सबको? जस्ट हैव ए लुक एट दिस मॉडल। स्ट्रेस लीड्स टू टेलीवर्किंग एंड टेलीवर्किंग लीड्स टू साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, और स्ट्रेस से वेलबींग भी बन जाती है। ये लिटरेचर ने बोला है, रिसर्चर ने नहीं बोला है। तो रिसर्चर ने एक पैराग्राफ लिखा होगा स्ट्रेस टू टेलीवर्किंग, दूसरा पैराग्राफ लिखा होगा स्ट्रेस टू साइकोलॉजिकल वेलबींग,
तीसरा पैराग्राफ लिखा होगा टेलीवर्किंग टू वेलबींग, 3 पैराग्राफ लिख लिए, 15-15 लाइंस लिखी होंगी और 3 हाइपोथेसिस बनाए होंगे। चौथा हाइपोथेसिस क्या बनाया होगा? टेलीवर्किंग एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन स्ट्रेस एंड वेलबींग। चौथा पैराग्राफ ये बनाया होगा। फिर उसने पेपर ही मीडिएटर के ढूंढे होंगे कि कहां टेलीवर्किंग किस किस जोन में मीडिएटर की तरह काम किया होगा। जब भी आप किसी मीडिएटर का पेपर पढ़िए तो आप उसकी कहानी को अंडरस्टैंड करिए कि किसी ने यूएस में कैसे कहानी बनाई थी। हर कंट्री का एक एक पेपर पकड़िए, देन यू विल सी कि आपको अपनी स्टोरी कैसे वीव करनी है। मीडिएशन, टेलीवर्किंग कैसे मीडिएशन बन गई, तो आप इसकी स्टोरी को कुक कैसे किया होगा, इनको पढ़ पढ़ के आपको आइडिया लगेगा इन ऑर्डर टू गिव दैट पर्सन जो सुपरवाइजर है या जो पैनल में बैठा होगा। बिकॉज many times people don't know that where is the research gap, how they have created research gap for teleworking between stress and well-being. पेपर होगा स्ट्रेस टू टेलीवर्किंग, पेपर ये भी होगा टेलीवर्किंग टू वेलबींग, दैट इज व्हाई रिलेशनशिप बने हैं, बट इट इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर दैट वी आर प्लगिंग इनटू दिस, इसके थ्रू। नाउ 4 हाइपोथेसिस हो गए। पांचवा हाइपोथेसिस क्या है? पांचवा हाइपोथेसिस है resilience leads to well-being ना, resilience leads to well-being। फिफ्थ इज दिस, resilience से भी well-being बनती है, जबकि तीर कहां लगा है? बीच में लगा है। बट the indirect arrow is resilience leads to well-being, this is H5। now H6, H6 क्या बनेगा? resilience multiplied by teleworking leads to well-being। resilience जो सुबह हमने 2 वे नोवा में किया है, सेम में अगर मॉडरेटर लगता है तो वो इंटरेक्शन होती है। हमने तो जेंडर और इनकम उसकी सोशो इकोनॉमिक की कर दी थी, डेमोग्राफिक की इंटरेक्शन की थी, बट सेम में अगर वेरिएबल्स आते हैं तो मॉडरेटर का काम सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन का होता है। तो द सब्स्टिट्यूट ऑफ 2 वे नोवा इन सेम इज इंटरेक्शन मॉडरेशन। होगा तभी होगा। ये है इसीलिए इसको मॉडरेटर लिया होगा। दैट इज वाई आप ये सोच, आपने पेपर कैसे ढूंढे होंगे? आपने पेपर ढूंढे होंगे रिजिलियंस एज अ मॉडरेटर, नहीं, ढूंढना है कि क्या रिजिलियंस वेलबींग को लीड करता है, ये ढूंढना है आपको। नहीं, हाँ, अब जो आगे सॉफ्टवेयर इसमें हमें कनेक्ट ये डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, पहले 3 में नहीं थी। आपने पेपर ऐसे सर्च किया होगा, रिजिलियंस एज अ मॉडरेटर, ऐसे सर्च किया होगा, ऐसे नहीं सर्च करनी। आपको कीवर्ड डालना है रिजिलियंस एंड वेलबींग, रिजिलियंस और वेलबींग, ये कीवर्ड डालने हैं स्कोपस में। मतलब 2 वे नोवा जो सुबह हमने किया, उसके अंदर क्या था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जेंडर और सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल था सोशो इकोनॉमिक लेवल। फिर हमने जेंडर मल्टीप्लाइड बाय सोशो इकोनॉमिक लेवल से सीजीपीए चेक करी थी, उनका एक बार एक एक करके उनको ऐड करा, फिर दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड करा। यहां पर क्या है? यहां पर आपको रिजिलियंस को ऐसे मतलब फिगर में ऐसे शो करना है, बट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेजिलियंस एंड वेलबींग। इसका मतलब है आपको सर्च करते वक्त अपना माइंडसेट ऐसे नहीं सोचना कि मैं मॉडरेटर ढूंढ रहा हूं, आपको सोचना है कि क्या एक वेरिएबल मेरे डीवी को इंपैक्ट करता है कि नहीं करता है। फिर उसके बाद आपने देखना है क्या रिजिलियंस और टेलीवर्किंग आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। एक कीवर्ड सर्च मारनी है रिजिलियंस और वेलबींग, अगली मारनी है रिजिलियंस और टेलीवर्किंग। आपने सर्च मारी होगी रिजिलियंस एज अ मॉडरेटर, ऐसे नहीं करनी, रिजिलियंस एंड वेलबींग, रिजिलियंस एंड टेलीवर्किंग, रिजिलियंस और टेलीवर्किंग भी नहीं करी होगी। आपने सिर्फ ये ढूंढना होगा रिजिलियंस मॉडरेटर है कि नहीं। गलत है ना? moderator is by default there, that resilience leads to well-being, resilience multiplied by teleworking leads to well-being as a moderator नहीं ढूंढना उसको, ना ना अभी तो आई नहीं। you have to find
आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि ये क्लास ऑफलाइन लगी, ठीक है, अगर यही क्लास मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाई होती तो मॉडरेटर क्या हुआ? टाइम, मोड, मोड ऑफ लेक्चर। मैं सेम हूं, मेरा लेक्चर भी सेम है, बट मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया। यही क्लास मैंने ऑनलाइन ली होती तो आपकी लर्निंग कुछ और होती। डिपेंडेंट वेरिएबल इज लर्निंग, तो आर स्क्वायर लर्निंग का कुछ और होता। ऑनलाइन में कई बार समझ ही नहीं आता तो आर स्क्वायर लो होते हैं, ऑफलाइन में बात हो रही है तो आर स्क्वायर कुछ और होते हैं। तो मोड ऑफ लेक्चर इज माय मॉडरेटर। तो आप ये चेक करते हैं कि मोड, तो ये रेजिलियंस की जगह मैं मोड डाल दूंगा, मोड का तीर लगेगा बीच में। दो कीवर्ड आप पहले मान के चलिए कि मॉडरेटर होता क्या है। मॉडरेटर एक इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट बड़ी चीज होती है। दिल्ली में दिल्ली में ग्रोथ इज द इन्वायरमेंट। इन अ स्मॉल सिटी आपकी इंप्लॉयमेंट होती है, ये भी सिटी है, इसमें भी इंप्लॉयमेंट होती है, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर है। यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, स्मॉल सिटी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम है। मैं सेम हूँ, मेरी इंप्लॉयमेंट सेम है, टीचिंग, but the environment is growth. So growth is acting as a moderator which regulates the environment. अब आप सर्च कैसे करेंगे? ग्रोथ एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ग्रोथ एंड स्मॉल सिटीज, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर आप लिखेंगे कि हाँ भी ग्रोथ इज अ मॉडरेटर, फिर उसका तीर वहां लगाएंगे जहां पर वो ज्यादा इफेक्ट करता है। समझे? अब आप इसका आउटपुट देखिए इस पेपर का कैसे लिया होगा टीचर्स ने। ये जयपुरिया का ही पेपर है ये, बाकी सब सेम है, मतलब सी एफ ए सैम सब लिखे हुए हैं। मीडिएशन भी दिखा दी हुई है, ये रिमीडिएशन H5, PS to TW और वेलबिंग जो भी है आपका टेलीवर्किंग। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, resilience multiplied by teleworking interaction effect। ठीक है, टेलीवर्किंग लीड्स टू resilience लीड्स टू, ये भी है ऊपर स्टेप 2 में, ये पहले है, और कंट्रोल वेरिएबल सबसे पहले है। दुनिया में सेम के अंदर सबसे पहले क्या आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कंट्रोल वेरिएबल? कंट्रोल वेरिएबल्स। हाँ जी, देखिए स्टेप 1। तो सेम हम क्या करते हैं, सारी सेम लगा ली और कंट्रोल वेरिएबल लेके ही नहीं आते पहली बार। नंबर 2, कंट्रोल वेरिएबल पहले आए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एज ऑन वेलबींग? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन वेलबींग? व्हाट इज द नंबर ऑफ टेन्योर इन माय एम्प्लॉयमेंट ऑन वेलबींग? ये चीजें पहले आई। इनके होते हुए देन आई ब्रॉट टेलीवर्किंग, देन आई ब्रॉट रेजिलियंस, स्टेप 2। उसके बाद मैं इंटरेक्शन इफेक्ट मॉडरेशन चेक करूंगा कि क्या जॉइंट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो सेम इज रन ट्वाइस, थ्राइस। पहली सेम लगती है ओनली कंट्रोल वेरिएबल एंड डीवी, सेकंड लगती है आईडीवी एंड डीवी, थर्ड सेम लगती है सब मिला के, आईडीवी भी है, कंट्रोल भी है और डीवी। 3 बारी सेम लगाई जाती है। तो ये 3 बारी ऐसे लगाई जाती है, पहले कंट्रोल वेरिएबल, फिर आईडीवी, फिर इंटरेक्शंस। कंट्रोल का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ दीज वेरिएबल्स हाउ वेलबींग इज मेजर्ड। क्योंकि आपके पास तो 10 कंट्रोल वेरिएबल होंगे या 100 कंट्रोल वेरिएबल होंगे, यू टेक ओनली सिग्निफिकेंट कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल भी चेक किए जाते हैं वन बाय वन, कि मैंने लिटरेचर व्यू से 10 इकट्ठे कर लिया, तो वन बाय वन, इज इट सिग्निफिकेंट, इज इट सिग्निफिकेंट, इज इट सिग्निफिकेंट। आउट ऑफ 10 इनके पास ये 3 सिग्निफिकेंट आए होंगे, तो वी वर्क विद ओनली सिग्निफिकेंट कंट्रोल वेरिएबल्स, जिसका कुछ ना कुछ है इफेक्ट। हाई कोरिलेशन नहीं है बट कुछ इफेक्ट है आर स्क्वायर के ऊपर, इसलिए इनकी प्रेजेंस में चेक करना है आईडी। लिटरेचर आप 100 पेपर पढ़ेंगे, आपके पास तो बल्क ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स आएंगे। सो यू हैव टू सिंथेसाइज एंड वर्क ओनली इन द सिग्निफिकेंट कंट्रोल वेरिएबल्स, इसलिए उनको रिमूव नहीं कर सकते। क्या पता इनके 5 हो और 3 सिग्निफिकेंट हो, 2 लिए ही नहीं, आपको 2 दिखे ही नहीं, बात ये है।
लेकिन 3 दिख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि ये 3 भी क्यों लिए। ये 3 इसलिए लिए क्योंकि काफी में से ये 3 ही बचे होंगे जो सिग्निफिकेंट है। चेक कैसे करते हैं? लुक एट, एक मॉडल दिखाता हूं आपको। ओके, जस्ट हैव ए लुक एट अ मॉडल एंड चेक कैसे करते हैं। देर आर सम क्वेरीज ऑल्सो, मैं क्वेरीज को भी लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट रेपुटेशन लीड्स टू कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनती है और लॉयल्टी बनती है और लाइकनेस भी है बीच के अंदर। एंड आई वांट टू चेक वेदर माय कंट्रोल वेरिएबल इज अ सिग्निफिकेंट और नॉट। मैंने 10 इकट्ठे करे हैं, लेकिन एक एक करके चेक करना है। तो लेट अस से माय कंट्रोल वेरिएबल इज सर्विस टाइप। ये रहा, प्रीपेड और पोस्टपेड सिम होते हैं ना हमारे पास। तो 0 का मतलब है प्रीपेड सिम, 1 का मतलब है पोस्टपेड सिम, या ये जेंडर है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जेंडर मेरा कंट्रोल वेरिएबल है सिग्निफिकेंट। सो नहीं नहीं नहीं, you have to check whether this has some relationship with any of the variable in the model. Any, सबके साथ, रिलेशनशिप के साथ नहीं, कंस्ट्रक्ट्स के साथ, सभी कंस्ट्रक्ट्स के साथ। Is this variable has any significant contribution to my model? अगर एक भी निकल आई तो ये स्टे करेगा, एंड एक भी पॉजिटिव हुआ तो इट विल स्टे। हाँ, किसी भी रिलेशनशिप में इफ इट इज सिग्निफिकेंट तो इसको मैं बूटस्ट्रैपिंग रन करता हूं और क्विक टाइम। लेट मी जस्ट स्टार्ट। ऐसे ही दूसरा कंट्रोल वेरिएबल, फिर तीसरा, फिर चौथा। सो the arrow is on not the relationship but on the constructs. So let me see the path coefficient. सर्विस टाइप का देखना है ना, तो सर्विस टाइप किसी एक में भी सिग्निफिकेंट है। लेट मी जस्ट जॉट डाउन ऑल द सिग्निफिकेंट टुगेदर। ये ग्रीन वाले सारे मैंने इकट्ठे कर लिए। इनमें ग्रीन में किसी पे सर्विस क्वालिटी है? इज देयर एनी वेरिएबल? ना ना, सिग्निफिकेंट में देखो, इस एरिया में कहीं पर भी सर्विस टाइप है? ये सारे रिलेशनशिप है, रेपुटेशन, रेपुटेशन, सेटिस्फैक्शन, लाइवनेस, कॉम्पिटेंस। सर्विस टाइप इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, देयरफॉर इट इज नॉट अ कंट्रोल वेरिएबल। लिटरेचर ने बोला था, लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूंगा इसको मॉडल में, फाइनल मॉडल। किसी एक में भी आया तो मैं रख लेता हूँ, नहीं, आई विल रिटेन इट। एंड में फिर वही होता है कि जैसे ये पेपर में फिर मैं करूंगा कि कस्टमर लॉयल्टी इन द प्रेजेंस ऑफ जेंडर, फिर मैं, ये मेरा मॉडल कंप्लीट मॉडल होगा। तो आई विल वर्क ओनली विद कंट्रोल वेरिएबल्स। यहाँ पर सीवी, वो वाले सीवी, दोज आर ओनली दी सिग्निफिकेंट, किसी एक लेवल। पेपर में हाँ, नहीं नहीं, डी भी नहीं था। ये देखो, स्टेप 1 मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप 1, एज लीड्स टू वेलबींग। वो वैल्यू है इसकी, डीवी इज वेलबींग, डीवी इज वेलबींग। ये सारी वैल्यूज, डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेलबींग, वेलबींग इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल वेरिएबल। तो एज लीड्स टू वेलबींग, नो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू वेलबींग, नो। टेन्योर लीड्स टू वेलबींग, नो। जब चेक करा होगा तो ये सिग्निफिकेंट थे, तीनों को लिया, रिटेन किया, बट फाइनल मॉडल रन किया तो नहीं आया। ठीक है, कौन से रखने भी है, रख के भी इनसिग्निफिकेंट आ गए। तो किसी एक जगह पे आर स्क्वायर में कहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको रखा गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसका इम्पैक्ट है।
तो आर स्क्वायर 10 से 12 हो गया होगा, 12 से 14 हो गया होगा। कई बार एस आर एम आर नहीं आते, कई बार हमारे बैडनेस ऑफ फिट आती है। वो इसलिए बैडनेस ऑफ फिट आती है क्योंकि हमने कंट्रोल वेरिएबल नहीं लिए होते इन। नहीं, तब ये कहीं ना कहीं पी वैल्यूज इनकी सिग्निफिकेंट, वो सिर्फ चेक करने के लिए। फाइनल मॉडल यही होगा कि कंट्रोल वेरिएबल ऑन डीवी, तब ये वैल्यू आएगी। ये बीटा है, चेक करेंगे। हाँ, ऑन डीवी, यस। एंड दिस 02 इज बीटा, दिस इज बीटा। टेलीवर्किंग का बीटा देखो सिग्निफिकेंट, रेजिलियंस का बीटा सिग्निफिकेंट है, टेलीवर्किंग और रेजिलियंस मिलके भी सिग्निफिकेंट है, जॉइंट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। एज ऐसे नहीं, सबके साथ, सबके साथ चेक किया था, और कहीं किसी रिलेशनशिप में दे वर हैविंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इसलिए आई हैव स्टेट देम, मैं रखा उसको, रिटेन करा। लेकिन जब ये मॉडल रन किया फाइनल मॉडल, तो उसमें वैल्यू चेंज होके आई 02 एंड विच इज इनसिग्निफिकेंट। बट गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ना कुछ तो आर स्क्वायर ये बढ़ाता ही है कंट्रोल वेरिएबल। ये इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि हमने इसलिए रखा था क्योंकि ये टेली वर्किंग या किसी ना किसी के साथ तो इसका रिलेशन है। लेकिन सर्विस टाइप को चेक करा, उसका किसी के साथ नहीं था, तो उसको हम लेंगे ही नहीं। मॉडरेटर इज समथिंग एल्स। मॉडरेटर का मतलब है कि अब ये मॉडल है, इस मॉडल में मान के चलो सर्विस टाइप ये है, मान लो ये टोटल मॉडल है, दिस इज टोटल मॉडल, ठीक है। एक होता है इंटरैक्शन मॉडरेशन, इंटरैक्शन समझ आ गई। एक होती है कैटेगोरिकल मॉडरेशन, वन इज कैटेगोरिकल मॉडरेशन। इंटरैक्शन मीन्स लेट अस से एटीट्यूड लीड्स टू दिस रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये एटीट्यूड लॉयल्टी को भी इंपैक्ट करता है, और एटीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ट्रस्ट आल्सो लीड्स टू लॉयल्टी, ठीक है। बट कैटेगोरिकल वर्क्स ऑन ग्रॉस इन्वायरमेंट। फुल मॉडल, इसका मतलब है दिस मॉडल विल बी रन ओनली ऑन प्रीपेड यूजर्स फर्स्ट। मान लो 100 बंदे हैं, 60 बंदे प्रीपेड यूजर्स के हैं, 40 बंदे पोस्टपेड यूजर्स के हैं। तो एक बारी प्रीपेड के ऊपर, एक बारी पोस्टपेड के ऊपर, तो मान लो 5 हाइपोथेसिस है, तो 5 बीटा प्रीपेड के आएंगे, 5 बीटा पोस्टपेड के आएंगे। फिर वो पांचों बीटा को कंपेयर करेंगे, इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द, वो एमजीए इस कैटेगरी। तो दो मॉडरेशन होती है। मीडिएशन तो होगी सिंपल, पैरेलल, सीरियल और इंटरेक्शन। लेकिन मॉडरेशन भी हुई, इंटरेक्शन मॉडरेशन और एमजी कैटेगरी पर, जिसको मल्टी ग्रुप इस कैटेगरी का। 5 हाइपोथेसिस, 5 बीटा प्रीपेड के, 5 हाइपोथेसिस पोस्टपेड, 5 बीटा पोस्टपेड के, फिर सारे बीटा का कंपैरिजन। There are so many papers to support. One is human behavior between USA and Germans. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी कभी नहीं बनी। वन इज ह्यूमन बिहेवियर, जिसके कारण अमेरिकन डोंट प्रेफर जर्मन टू पीएलएस, राइट। तो जो अमेरिकन एडिटर्स हैं, दे डोंट प्रेफर पीएलएस, दे वांट सीवीसएम, बिकॉज वो एमएस को प्रमोट करेंगे, वो अपने कंट्री के प्रोडक्ट को प्रमोट। दिस इज वन। टू इज, जो एमएस है, एमएस इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, और पीएलएस इज अ नॉन पैरामीट्रिक सेम। इसलिए वो कहते हैं कि आप पैरामीट्रिक सेम लगाओ, बिकॉज पैरामीट्रिक मीट्स द assumptions ऑफ रिग्रेशन, है ना। और दिस नॉन पैरामीट्रिक डजंट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नॉर्मेलिटी assumption।
तो इसलिए कहते हैं कि आपने एक सब्स्टिट्यूट सेम लगाई है, आपने मेन सेम तो लगाई ही नहीं, इसलिए एडिटर ये बोलते हैं। लेकिन हम अगर उसको जस्टिफाई करें कि दी मल्टीवेरिएट रेसिडुअल वाज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए मैंने इसको लगाया। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। तो एक मैं आपको एक और पेपर सेंड करूंगा। हम्म। इसके लिए ना एक ये देयर आर 4-5 रीजंस व्हाई सीबी सेम, ये एक पेपर हमने लिखा रोबो एडवाइजरी का। You see, non-parametric variance-based partial least square structural equational modeling was employed in our paper. Non-parametric. I've written the word non-parametric. PLS is considered a suitable approach when the objective is prediction. उसमें नहीं है prediction. इसमें PLS predict है, उसमें PLS predict नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोडिक्शन है, तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव प्रोडिक्शन भी रखा हुआ। PLSM is appropriate if the model is complex model, because convergence complex model की PLS करता है, covariance variance matrix नहीं कर पाती है, ये उसकी ड्रॉबैक है। So you have to harpen on the drawbacks of CBSM. complex model पे उनकी GFI और chi-square converge नहीं होगा। Next, PLSM is applicable to present study because we aims to establish the theory. हम थ्योरी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक रोबो एडवाइजर को फाइनेंशियल मार्केट में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट टू एक्सप्लोर हाउ रोबो एडवाइजर्स आर वर्किंग इन इंडियन सिनेरियो। लोग चैटबॉट से भी तो बात करते हैं, एयरलाइन में एयर होस्टेस से थोड़ी बात करता है कोई, चैटबॉट से बात करता है कि फ्लाइट स्टेटस बताओ। ऐसे ही बैंक के चैटबॉट्स होते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के चैटबॉट्स होते हैं। सो आई वांट टू एस्टैब्लिश अ थ्योरी, therefore our objective is motivated by pragmatic need of phenomena of interest by employing PLSM. और क्या है, CBSM is not appropriate method because it is based upon common factors which are having infinite range and are on arbitrary quantities. ये फैक्टर स्कोर्स के ऊपर बात करता है जिसकी कोई फाइनाइट रेंज नहीं है, जबकि PLSM is working on latent variable score. They are finite in nature, they are exact in nature. इसलिए हमारे को एग्जैक्टनेस पे काम करना है, इनफाइनाइट पे नहीं काम करना है। फैक्टर स्कोर्स और लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स दे आर डिफरेंट। और ये 1978 में स्टीजर बोले, 1979 में। इन कॉन्ट्रास्ट PLSM is working on determinate factors functions of composites which is weighted sum of specific subset of constructs. तो PLSM की जो एल्गोरिदम है वो लेटेंट वेरिएबल स्कोर्स की स्पेसिफिक रेंज को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक है वो, और इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ रिग्रेशन टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस इन एंडोजेनस। तो शमूली ने ऐड ऑन कर दिया इसके अंदर, इसलिए ये लॉजिकल रीजंस हैं, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कम्प्लेक्स मॉडल, अब कईयों में थ्योरी ही कम होती है एंड इट लैक्स सपोर्ट ऑफ थ्योरी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही कम है। तो जब थ्योरी ही कम अवेलेबल है तब तो PLS पे जाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक पे, क्योंकि CBSM इज थ्योरी टेस्टिंग, इसका मतलब थ्योरी होनी जरूरी है। जब थ्योरी नहीं है तब तो ये यूज होगा, इसलिए PLS इज अ बेटर अप्रोच, राइट। सो ये है। एक टेस्ट होता है मार्डिया का कि उसमें मल्टीवेरिएट स्क्यूनेस और कर्टोसिस वैल्यूज चेक की जाती हैं। अगर उसमें डेटा नॉट नॉर्मल आ जाए तो हम तब भी बोल सकते हैं दिस इज अनदर रीजन ऑफ अप्लाइंग PLSM। अगर आपकी मल्टीवेरिएट नॉन नॉर्मेलिटी आती है तो हमारे को PLSM ही लगाना है। तो लेक्चर का शुरुआत भी नॉर्मेलिटी पे था, एंड भी नॉर्मेलिटी पे है। अगर नॉर्मल नहीं है मल्टीवेरिएट तो PLSM ही दुनिया है, तो CBSM नहीं है आपके काम की चीज। तो रोबो एडवाइजर का पेपर ये ओपन एक्सेस है, अब मैं मेल कर दूंगा आपको। I'll share you paper of serial parallel, चारों मीडिएशंस के टाइप और ये। Tomorrow you will see that the first lecture will be on CFA,
ये वेरिएबल्स को कंफर्म कैसे किया जाता है, सेकंड में आपका आएगा वो कैसे वैलिड हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, तो उसी में आपकी मीडिएशन भी कवर हो जाएगी. So let me just see some of the doubts. So Rupal, tomorrow exactly Smart PLS will be the day, right? And how can hypothesis be formed in MANOVA? Same way, the way we are maintaining hypothesis in SEM, like A leads to B, quality leads to satisfaction. So Rupal says which variable is mediator? Mediator is a variable which connects the IDV and DV. It is acting as a mediator. They are measured as metric data. So Simran, your answer is variables are measured as metric data statement, 1 to 7 statement. Nominal data has to be converted into binary. Okay, indexing will be done tomorrow. Scale development is tomorrow. Multicollinearity, multicollinearity will be there, but VIF values has to be reported from the software, has to be less than 5. Right. So thank you so much for patiently listening me. I guess these are the people who are left. Okay. Take care. See you on the some another platform. Thank you. Thank you. Thank you for inviting.